system because of which we are losing this amount. So then, and then because of this only, you will find many agri-tech startups are into supply. They are, in a sense, they are doing nothing. They just have their own prototype, tied up with the cooperative, FPO and the individual farmers. Yeah, they are procuring from the APMC मंडी जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ से प्रोक्योर करते हैं. उनका अपना मैकेनिज्म है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, कलेक्शन सेंटर है, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग करते हैं, अपना लेवलिंग वगैरह करके B2B, B2C में वो करते हैं. निंजा कार्ड आपने सुना होगा, देयर आर फार्म ताजा आपने सुना होगा, देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स. दे हाथ आपने सुना होगा, इनपुट्स में वो है. So many agri-tech startups are into this. तो अभी क्या रिक्वायर्ड है? अभी ये है अमाउंट, इसको मिनिमाइज करने के लिए कैसे हम सर्विस सेक्टर में कोऑपरेटिव जा सकते हैं, कैसे हम वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग में जा सकते हैं. मैंने फैक्ट्स फिगर यहाँ पे नहीं दिखाया, बट इन इंडिया fruits and vegetables only 2% we are producing, only 2%, and in general of all commodities it is only 8% average of all the commodities, right? So this is what the issue actually. तो इसीलिए यहाँ पे ना lot of effort अभी ये कर रहे हैं. तो अभी इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए पहले कंप्रेशन कर रहे हैं ताकि इससे एटलीस्ट थोड़ा सा एक सिस्टम डेवलप हो जाए, एंड देन फिर पैरेलली बातें ऐसे भी चल रही हैं कि कैसे हम इनका स्ट्रक्चर रिवाइव करें, क्या इनका बिजनेस मॉडल हो सकता है. बिकॉज अभी लॉन्ग टर्म तो हमने इधर डाल दिया है, इनको भी अलाउ किया है, राइट, विद द सपोर्ट ऑफ DCCBs. तो इसलिए यहाँ पे अभी काफी बातें हो रही है, डिस्कशन चल रहा है कि कैसे इस सेक्टर को रिवाइव कर सकते. इंपॉर्टेंस है इसका, रिलेवेंस है, बट इट जस्ट मैटर ऑफ कि क्या बिजनेस मॉडल इनके लिए हो सकता है. दैट्स Sir, I think as far as concerned of the performance of PACS are concerned, as you said, there are some farmers who regularly pay their loan, and there are some who are not paying, and due to a political pressure, there may be a loan waiver and other things also. So, can we think those who are a regular payer, they have some incentives, like maybe in the form of subsidies, or in the form of maybe in any form. I mean, so that people will encourage to repay their loan on the regular basis. If there is a uncertainty, and government decide to loan waiver, that's fair enough. We can understand the risk associated with the agriculture sector. But at least, I think if there are some mechanisms where we can incentivize the regular loan payer. So this will have a two impact. Regularly you can get money from the payer, and it encourage other farmer also to repay their loan on the regular basis. exactly, sir. This is how actually in economics we have one concept called cross subsidization. cross subsidization. Yes. Yes, sir. So that can be, I think, introduced over here. Yes. Like the mention these member who are user, those who are repaying, we need to incentivize them. Yes. But Because in cooperate, at present there are no mechanisms. there are no mechanisms. What generally cooperatives they do, even including PACS, Credit Society, they issue dividend only. Those who are in profit, तो at least 7-8% वो dividend दे ही देते हैं. ठीक है. तो those who are repaying regularly, so it is injustice with them. Yes, exactly. है ना? And in fact, those who are not taking loan, member but non-user, right? अब ये farmers है, they all are farmers, they all are farming actually. So definitely उनको पैसा तो चाहिए. So then why they are not? तो उसमें दूसरा भी एक हमारे सिस्टम में फ्लॉ है, तो वो ये है. अब एक एग्जांपल जो हमने देखा शुगर केन में, सर शुगर केन मतलब ये हाउ बेसिकली क्रॉप लोन अमाउंट गेट, मतलब दिस नाबार्ड वर्क्स आउट. तो उनके लिए मैकेनिज्म है, वो हर साल ऑलमोस्ट वो एक DCCBs के साथ, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ में एक कंसल्टेशंस करते हैं. उनका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, SOP कॉल्ड. एज पर दैट वो वर्कआउट करते हैं. तो टाइप क्रॉप एंड लाइन साइज, बेस्ड ऑन दैट थोड़ा सा उनका फॉर्मूला है, वो डिस्क्लोज नहीं करते. बेस्ड ऑन दैट बेसिकली तो शुगर केन में सर उनका 48,000 पर एकड़ का वो लोन देते हैं. ठीक है.
But at the same time, जब private है against that, I don't know how they manage, but they give 70,000. Despite the fact this is 0% interest and this is more than 14%, as per type of bank it varies this percentage. Still my farmer is going here because he need cash, he need money actually. उसका वैल्यू ज्यादा है. वो ये नहीं देख रहा है कि आज 14% है. उसको चाहिए immediate cash so that he can buy sugarcane, and then plant. Yeah, he buys seeds, fertilizer, whatever it is required. तो कहीं ना कहीं ये भी now ongoing discussion इस पे भी चल रहा है इस mechanism में. Actually, in the South Gujarat region, sir, because I belong to that place, so we have a lot of sugar cooperatives, and I think there's one sugar cooperative, a Gandheri sugar cooperative. Bardoli sugar, I think, is largest in as far as concern of their turnover and other things like that. Okay. But this sugar factory provides, I think, highest, minimum price or base. That is FRP, huh? So, I mean, we had visited over there, like, at some point of time, and meet the authority over there. They said we did a lot of diversification and buy. So, they said there is a single drop, sweet drop in the sugar cane. We do not waste at least a single. That much amount of, like diversification we did, and we make, handsome amount of profit. Like sugarcane, coconut, not a single stuff gets wasted. Yeah, here also. Sugarcane is also like that. Coconut is also like that. Sugarcane में there are good, factories, sugar mills available. Those who have a co-generation plant, electricity generation. Now, during COVID also, few sugar mills they have also gone for oxygen production. There are cases during COVID time because shortage था, right? So sugarcane का, I think sugarcane अपने आप में काफी बड़ा एग्जांपल है, राइट? तो काफी कुछ इसके वाले, एंड देन नाउ बायो इथेनॉल के लिए ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, ऑलरेडी पॉलिसीज आर बीइंग पेपर मेकिंग में भी है जो निकलता है. So what not basically we can do with this, and then in pharmaceutical also, pharmaceutical में भी इतने सारे इसके प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं, but that is how actually this is where basically the leaders need to think. Leader need to. This is where leaders need to think कि भाई we need to diversify, and for which basically members also we need to orient. We need to have a different services. So इसलिए that is where basically the minister suggested to NCUI you have a standardized module, sector specific module wherein you can focus on the business diversification. So at least उससे ये तो पता चलेगा जो existing members है या जो आने वाला यूथ इसमें, उनको ये तो पता चलेगा कि भाई how sugarcane cooperative operates. हम sugarcane से क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं. Already हमारा वो मॉड्यूल बन गया है in the review में. Actually, the director of that sugar mill was a professor of economics in one college. Spending some time in college, then he decided to resign from the professorship and venture into. मैं really झूठ नहीं कह रहा हूँ. Sometimes I also feel ये सब झूठा है. PACS का secretary बन जाओ. मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा. सच में झूठ नहीं बोल रहा. because इतना potential है. मैं already कहा मैं PACS का member हूँ. इतना कुछ यहाँ पे कर सकते हैं. Right? इतना potential है. So but yeah. South Gujarat में numbers of study done on PACS. तो उसका जो पूरा जो रिजल्ट है उसमें ऐसा निकल के आया है कि कैपिटल जो पॉलिटिशियन है या जो बड़े फार्मर है उनका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर को कम मिलता है. जब लॉन्ग टर्म का लाओगे तो उसका बेनिफिट भी पूरा उनको ही आएगा. समझो स्मॉल मार्जिनल तो जाएगा नहीं, वो कितना सक्सेस है क्योंकि जो पूरा जो उसका जो कैपिटल है कैपिटल तो वो लोग ही खींच के ले जाएंगे. समझो कैपिटल बचेगा